It is a time of reflection and deep reflection. It is a time of researching and going back to your research and asking questions. It's a time of witnessing the situation. It's a time of transformation. It's time to realize the power of image, and it's time to question the role of words and images in our society. It's a time to think over music. It's a time to utilize music as a vehicle for strengthening the peace building process. Peace is not something you wish for. It's something you make, something you do, something you give away. Peace is a sense of freedom in itself, something which frees the soul and gives a new belief to a human being for achieving something with a good motive. Peace is an unexplainable feeling that terminates all malicious thoughts and completely purifies one's actions and beliefs. Peace can be defined as a medium to obtain complete serenity. It derives the trouble to the path of sanity. Sabtain, Naveed, and Zamzam wished for peace like others, but in this process they realized it wasn't something that was already given to them. They will have to struggle for it. They will have to build it, building bridges of peace. What are the factors that disturb peace? Lack of tolerance, jealousy, war. Jealousy, conflict on ideologies, the conflict on ideologies, yes. national perception, Lawlessness or उसको let's say जी inequality, yeah. Injustice. Peace building is a challenge to the status quo, to certain forms of freedom that we are experiencing today. conflict on ideology, injustice and economic instability. یہ وجوہات مجھے نہ پڑھائی گئیں نہ سنائی گئیں. بچپن سے آج تک دشمن دشمن اور صرف دشمن کا سبب. But if you haven't internalized it for your own freedom, you talk about liberty and freedom, this is what you want for yourself and for your children. Before we saw these. So what about those children who are outside? What future? That is why countries invest a lot in education and in health. अच्छी नेशंस की पॉलिसीज में वो एजुकेशन पर बहुत इन्वेस्ट करती हैं. جینیفر آج فریڈم، لبرٹی، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی بات کرتی ہے. یہ ان کی بات کیوں نہیں کرتی جن کے پاس تعلیم ہے نہ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی. People are not allowed to practice their religion freely. They are not respected. Health facilities, for some it's very good and for some you can't even get to districts, right? Education is lopsided, extremely lopsided in our country. Other factors, security, justice, equality, all these are connected. But अगर आपके पास शुरू से education ही नहीं होएगी, अगर शुरू से नहीं होएगी तो फिर आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए
FC College Charter University is the first ever institute in the Pakistan that participated in developing and adopting peace building curriculum accompanied with art-based tools for its undergraduate classes for 3 credit hours, and this journey started in 2008, where a peace building curriculum workshop was held in Christian Study Center, Rawalpindi, in which eminent scholars graduated from Eastern Maronite University, USA, Vice Rector FC College, Dr. Fawzia Curriculum Specialist, and other senior members from academia and civil society participated. During this paid work ever initiated in Pakistan, a way forward for developing peace. शख्स, एक एथनिक ग्रुप, किसी कोई और ग्रुप जो आपसे अगर मुख्तलिफ होए, आप उसके लिए इनबिल्ट तासब प्रेजुडिसेस पैदा करें. And this is the biggest hurdle that comes across people. क्या खूब बात कही जेनिफर ने. सारी ज़िंदगी इस बात से डराया गया, यहूदी ईसाई तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ये तुम्हें मार डालेंगे. आज ये सब क्यों नहीं दिख रहा? मेरा ये मज़हब तो इज्तमाइयत का दर्स देता है, दूसरों से प्यार करने की तलकीन करता है, फिर वो नफ़रत और हकारत का दर्स क्यों? That's a very wrong way of bringing up a child, psychologically. You're creating fear and remorse. मैंने एक मदरसे में होश संभाली, इन्हीं रास्तों पर मेरा बचपन गुजरा. इस किताब के साथ मेरा रूह का रिश्ता है. ये पढ़ाई तब भी जाती थी और ये पढ़ाई आज भी जाती है. कल भी कई सप्तैन पढ़ते थे, आज भी कई सप्तैन पढ़ते हैं, मगर आज सप्तैन को उन सवालों के जवाब जो इस किताब में लिखे हैं बाहर से क्यों ढूंढना पड़ रही है. क्या ही अच्छा होता इस अमन और आश्ती की किताब को समझ कर पढ़ा जाता. Who are the Taliban? The Taliban कौन है? It's not a full stop. So it's not a statement, it is a question. And it is a question for us to explore. और जो आपकी भी बात है, ये कौन है, उनके backgrounds कौन है. But जो भी ये कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, we have to decide as individuals what is right and what is wrong. इस्लाम अमन का दीन है, जब्र और ज़बरदस्ती का नहीं. फिर ये तालिबान क्यों हम पर ऐसा इस्लाम थोपना चाहते हैं जो ना अमन है ना प्यार. जेनिफर सच कहती है, सोचना हमको है. आखिरकार ये फ़ैसला हम ही को करना है, क्या सही है और क्या गलत. शायद आज मैं सोने से पहले कुछ फ़ैसला कर चुका था. कुछ दिनों से टीवी पर जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बढ़ती इंतहा पसंदी की बहुत बात हो रही है, पर अब मैं सुनना नहीं, देखना चाहता हूँ. So a beautiful, peaceful morning. When I look out of my balcony just after dawn, only chirping of birds greets me. Often at night, before I shut out the day work from my mind, I wonder that tomorrow will begin with the same brilliance or not. I've always been studying in Jesuit institutes. I have been a student of St. Dominican Convent School, and then I did my FSc from St. Dominic's College, and now I'm a student of FC College. And these are all Jesuit schools and colleges. And my parents told me that there is no discrimination based on religion, on sects. You should have respect for humanity. You should respect every single human being that you come across in your life. स्टेटस को बुनियादी तौर पे एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसा है जैसे ही बुनियाद पे वो कायम रहे और उस पर तब्दीली ना आए.
جو امیر ہے جو غریب ہے, اور جس طرح کے حالات ہیں, جیسے کورٹ اسٹے دیتا ہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا کہتا ہے کہ اگر کسی کا قبضہ ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہے, وہ بعد میں کریں گے, ابھی اس کو چھیڑے ہوئے کنسٹرکشن نہیں کریں گے. تو اس طرح سماج کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو نہ بدلنے کی جو کوشش ہے اس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں. غریب رہے, امیر رہے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. The reason that I joined this course was basically I wanted to learn a bit more about peace, and I wanted to make a little contribution of my own for the society wherever I can do. And I wanted to learn a bit more skills, something more, so that I should be in a better position to do something in future. Consciousness, dialogue, critical dialogue, climax, یہ انسان کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اس نے کہا کہ کوئی دنیا کا انسان کسی کی تقریروں سے, کسی کے سرمن سے, کسی کی نصیحتوں سے نہیں ہوتا. انسان بدلتا ہے تو اپنے فیصلے سے, اور وہ فیصلہ کب کرتا ہے جب وہ ان چیزوں کے متعلق کنفیوز ہوتا ہے, اس کو کوشچن کرتا ہے, کریٹیکل ڈائلاگ کرتا ہے, بات کرتا ہے. I was born in a Sayyid family, and it is one of the higher caste and people pay a lot of respect, but that definitely implies some obligations, especially when we go to our village. We're supposed to wear that veil, or we have to observe parda, otherwise people will look like you will feel yourself like an odd man out, and people will look at you like you're Sayyid and you're not wearing something like chadar. When we discover theatre, we discover him. کیا بات ہے, جب ہم نے تھیٹر کو ڈھونڈا ہم نے انسان کو ڈھونڈ لیا. فضول بات لگتی ہے, گہری لگتی ہے. کیسے آہستہ کروں گا سلو موشن میں تاکہ ہم سب اس کو Accept people for who they are, not for what they aren't. Do not enforce the ideal of your perfection of people on them. That conditions people to feel threatened and imbues an inferiority complex. زیادہ آپ لوگوں کا اسٹریس ہے. اس کی کچھ ہسٹوریکل ریزنس بھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پوئٹری کو زیادہ لوگ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹرک والا سے لے کے رکشے والے سے لے کے جو اسکالرس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جبکہ جو امیجز ہیں اور پینٹنگس ہیں اس کو بہت کم لوگ ایک تو سمجھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس کا یوزیج نہیں ہے. When I was very young, I liked playing with meaningless words and putting them together to make meaningful sentences. Belonging to a Saraiki background introduced me to the poetry of Khwaja Farid. His words that helped one recognize the inner self and what humans' relations meant couldn't get across my mind at that time. But going through the concept of peace building process made me understand the hidden message of peace and harmony behind those poetic phrases. ان علاقوں میں انتہا پسندی کی بات غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے, اور ایسا ہونا خارج از امکان بھی نہیں. موجودہ حالات میں آپ انتہا پسندی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, جبکہ پوری قوم بے چینی اور غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے؟ جبری طور پہ کسی کو منوانا یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین اسلام میں جبری طور پہ کسی چیز کو منوانا اصلاً ہے ہی نہیں, بالخصوص نظریات و عقائد جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے اس وقت جنوبی پنجاب میں انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں,
जनूबी पंजाब में इनको कोई खौफ नहीं है। ये इसका असल टारगेट जो है ना, मदारस, जो मदारस बने हुए हैं जगह जगह, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, असला भी वहाँ रखा हुआ होता है। कई मदारस ऐसे हैं जहाँ तरबियत याफ्ता नौजवान निकलते हैं, ख़ुद को हमले करते हैं। ये गवर्नमेंट फौरी तौर पर तमाम मदारस को अपने तहवील में ले ले। जैसे स्कूल चला रहे हैं, इसी तरह मदारस को भी गवर्नमेंट चलाए, उनके बंदे बैठे हों, उनका सलेबस हो, उनको गलत तरबियत ना मिले, गलत अशख़ास ना आएँ, पनाह ना लें। ये इन्होंने पनाहगाह बनाई है। मौजूदा हालात में आप इंतहा पसंदी के बारे में क्या सोचते हैं, जबकि पूरी कौम बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत से दो चार है? निज़ाम अदल बुनियाद है, और ये जितने कोशिशां थी अपन असल निज़ाम जड़ा है ना सी वो गैर इस्लामी निज़ाम ने भी को जड़ा ना ही दे देता वजे वो कहीं अमन दा ज़ामिन नहीं हो सकता। Otherwise, he was also in this. So then we'll find some area and do this. Raji साहब को पढ़ाया तालिबान की गारंटी कुछ तालिबान सवाल ही नहीं उठता है यहाँ, गारंटेड। तालिबान क्या, कौन तालिबान? जितना भी स्ट्रॉन्ग तालिब बन जाए ना, बुगटी तालिब को खेतरान इलाके में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। जितना भी स्ट्रॉन्ग खेतरान तालिब है वो लेगार इलाके में क्या कर सकते हैं? सिस्टम मजबूत है यहाँ का, सिस्टम फुल मजबूत है, और इतना खूबसूरत तरीके से ये रन कर रहा है ना सिस्टम। हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज इतनी है उसमें जो है ना, इतना कंप्लीट सिस्टम है ना हर चीज़ का। प्रॉब्लम पड़ रही है हमें बलूचिस्तान में और यहाँ खाली हकूक़ के अपने हकूक़ चाहते हैं वो, और स्पीडी जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि स्पीडी जस्टिस नहीं था, उस वजह से ये तालिबान का एक इशू था। क्योंकि इस्लामिक स्टेट तो है हमारा कंसिडर्ड इस्लामिक स्टेट है, बट वो लॉ में इतने ये डिफरेंसेस थे कि जस्टिस किसी को सही नहीं मिलता था। और ये तहरीक मोहम्मदी या जो भी नाफिज ये चाहते थे इस्लामिक सिस्टम, वो इसी वास्ते कि तंग आके ये किया, पर फिर गलत एलिमेंट्स भी बीच में पड़ गए और उन्होंने पड़ा इसको डिस्टर्ब किया। समझ नहीं पाया। मुख्तलिफ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि जिस काम के लिए मैं गया हूँ, जिस मकसद के लिए गया हूँ, उसके बारे में मुझे बताएं और वो क्या है। मगर मैंने देखा कि बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से उनके माइंड में एक अजीब सी कशमकश है। वो लोग, उनके लिए तलाश सिर्फ उनके बुनियादी हकूक़ है, उनके लिए तलाश, उनके लिए पानी है, उनके लिए बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। वो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अभी वो लोग।